Day 5 of our Sikkim Travel Series was spent exploring places around Lachung. After a 10-kilometer drive from Lachung, we started the day at this incredible viewpoint, nestled amidst the magnificent Himalayan mountains. इस जगह का नाम Google Maps पे शिंगबा रोडोडेंड्रॉन सैंचुरी है और ये मार्च के महीने का व्यू है। मैंने और मेरे दोस्तों ने स्नो में काफ़ी इंजॉय किया और हम लोगों ने काफ़ी स्नो स्लाइडिंग भी की। मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए थी तो मैं मेन टूरिस्ट स्पॉट से थोड़ा दूर सा आ गया। This is so amazing. I'm just exploring hidden unknown places over here. It's a little bit scary because यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, बाकी सारे टूरिस्ट वहाँ पे उस साइड है स्नो में। मैं थोड़ा सा ग्रासी एरिया में आ गया हूँ and it is just incredible. I mean just look at this formation of trees behind me. It's scary, but it's so adventurous. And that log. I'm just taking a photo of the log. It looks so crazy. I think I'll. फिर मैं फोटोग्राफी में थोड़ा सा मग्न हो गया और मैंने उतना ज़्यादा ब्लॉगिंग पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ पे हाइकिंग करते हुए। ठीक है, I think I'll try and capture some trekking moments of myself. Trekking through these unknown areas and lands, it would be epic. It would be epic. Since this is the only point we have for today, it would just be epic. So. उसके बाद मैंने अपना कैमरा वगैरह पैक किया एंड आई बिगैन माई शॉर्ट हिमालयन हाइक। कहने को तो शॉर्ट हाइक था बट सेटिंग अप द कैमरा देन गोइंग बैक फॉर द कैमरा अगेन एटसेट्रा मेड इट अ बिट टायरिंग, but it was worth it since I was away from the shouts of the tourists playing in the snow and I could just enjoy the sounds of nature. Finally, ऊपर चढ़ते चढ़ते my solo hike was about to end and I was about to rejoin the rest of the tourists. There were fences at the top which was kind of like the end point of how far up we could go. And a lot of people were having fun playing snow fight with their friends. I had some happy conversations with them, shared some jokes and then was on my way back down to meet my friends who were throwing snowballs at me. Nice shot, लगा। And बस उसके बाद snow sliding का टाइम था। Oh bro, ये तो बेस्ट है। कैसा लगा ऋतुज? Awesome! मस्त जगह था ना? Yes! नीचे उतर के we did this, had some food and were on our way to the next point, Katao. रास्ते में road clearance भी चल रहा था, so we had to wait for a while. But then we continued our journey towards Katao, crossed the Khanda waterfall bridge, and we had reached our next viewpoint. So because of the snow, we missed Guru Dongman Lake as well as Zero Point near Lachung. That's why we've come to another point which originally we weren't going to do. So this is Katao. It is another one of I think India-China borders. वो थोड़ा ऊपर है, उतना ऊपर हम जा नहीं रहे. But this looks magnificent. Just look at the view all around me. It looks amazing. It looks magnificent. Simply beautiful. ओके, वहाँ पे आगे स्नेहा और श्रीनी है। उन लोगों को वाटरफॉल भी देखना था तो वो लोग वाटरफॉल देख रहे हैं और वाटरफॉल की फोटोज खींच रहे हैं। आई थिंक दोनों, आई डोंट नो आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं, बट दिस इज द वाटरफॉल, खांडा वाटरफॉल इसका नाम है। मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी नहीं है, काफ़ी औसत वाटरफॉल है। I think that's it for this video. If you like this video, hit the like button, subscribe to the channel and keep watching for more amazing videos. Sikkim, abhi baki hai mere dost.